Students, so today we are going to start the new examples of the linear equation in two variables. As you know that we have started the new topic from 9th standard, that is linear equation in two variable. Okay, so here we will simplify the example from the practice set 5.1. Solve the following set of equation, and there are two equations are given. In the previous lecture, in the last lecture, we have already seen how to solve the linear equations. Okay, if there are same variables and same coefficients were there, but here two equations are there. First equation is x plus y equal to 4, second is 2x minus 5y equal to 1. So first of all we will compare these two equations with 1 and 2. So we will consider let x plus y equal to 4, call this as equation number 1. Second, we will consider 2x minus 5y equal to 1, call this as equation number 2. After comparing equation 1 and 2, first of all we have to check whether the coefficient of x or coefficient of y are equal or not. So if you will check these coefficients, so you can see that here the coefficient of x is 2 and here the coefficient of x is 1. So they are not same. Same here, for coefficient of y is 1, here coefficient of y is minus 5. So these also are not same. Okay? For cancelling any variable, we have to make the coefficient similar. तो coefficient same बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये 5y है और ये y है, तो अगर मैं ये पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो y के कोएफिशिएंट सिमिलर हो सकते हैं. या फिर अगर तुमको x के कोएफिशिएंट सेम बनाना है तो ये 2x है ये x है, तो ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कोई भी दो चीज करनी पड़ेगी. Either you have to make coefficient of x as same or you have to make coefficient of y as same. ठीक है, अब करना क्या है, that is the important. अब तुम देख सकते हो मिडिल साइन, here it is plus, here it is minus, both are alternate sign. Okay, so we will make this coefficients of y, we will make this coefficient of y as same. How will make, this is 5y and here it is y, coefficient of y is 1. So we have to multiply all equation with 5. Equation number 1 को 5 से हम multiply करेंगे. When you multiply equation 1 with 5, you will get 5x plus 5y equal to 20. 5 4 5 are 20. Then 5y and minus 5 both will be same. The coefficients are same and the sign are alternate. Then we can simplify. और अगर तुम y को सेम नहीं बना रहे, x को सेम करा रहे, x को सेम बनाएंगे तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से नहीं करना है. सो 2x प्लस 2y इक्वल टू 8. फिर दोनों का 2x सेम आ जाएगा और दोनों का साइन भी सेम है. देखो 2x का साइन देखना, मिडल साइन नहीं देखते, जो कोएफिशिएंट को सेम बनाते उसी के सामने का साइन देखते. जो भी कोएफिशिएंट को हम सेम बनाएंगे, जो भी वेरिएबल की, जैसे y वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे तो उसके सामने के साइन चेक करना है. इफ आई वांट टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x एज सेम, तो x के सामने का साइन चेक करना, दोनों पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो हाउ विल वी सिंप्लीफाई, फर्स्ट विल राइट मल्टीप्लाई equation 1 by 5, we get, what you will get, 5 into x plus y equal to 4. Then 5 into x, 5x plus 5y is equal to 5 4 is 20. Okay, call this as equation number 3. 5x plus 5y equal to 20 हो गया. और इक्वेशन नंबर 2, 2x माइनस 5y इक्वल टू 1. अब दोनों में तुम चेक कर सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ y इज सेम, हियर इट इज माइनस 5y, हियर इट इज प्लस 5y. अभी इक्वेशन नंबर 1 3 बन गया, तो इक्वेशन 1 को इग्नोर कर दो. तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को देखो. इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 2 और 3 को अगर हम लोग चेक करेंगे, सो यू कैन ऑब्जर्व दैट एंड यू कैन सी दैट हियर इट इज प्लस 5y, हियर इट इज माइनस 5y. So both coefficient of y is same and the sign are alternate. If the signs are alternate, then we can add these two equations. We'll add this equation, so that here we'll write adding equation 1 and equation 2. We get, when you add equation 1 and 2, you'll get 5x plus 5y equal to 20 and 2x minus 5y is equal to 1. When we will add this equation, what you will get, minus 5y plus 5y get cancelled, 5x plus 2x 7x,
is equal to 20 plus 1 is 21, then x equal to 21 upon 7, then 7 1 is 7, 7 3 is 21. What will the value of x? We are getting x equal to 3. Yes or no? 5 plus 2 is 7x, 20 plus 1 is 21, then x equal to 21 upon 7. When you divide it, 7 1 is 7, 7 के डबल में 21 आता, 7 3 is 21. We'll get x equal to 3. Now we'll substitute this x equal to 3 in equation number 1 or 2. कोई भी equation में substitute कर सकते. We have got x equal to 3. Either you can substitute in equation number 1 or equation number 2. So we'll write put x equal to 3 in equation number 1. क्यों इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करें x इक्वल टू 3 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. अभी x का वैल्यू तो मिल गया, अभी हमको फाइंड आउट कौन सा वैल्यू करना है, y का. इसलिए so we'll write here therefore x plus y equal to 4, तो 3 plus y equal to 4, y equal to 4 minus 3, therefore y equal to 1. This got the answer. ठीक है. So therefore we will write x equal to 3 and y equal to 1. This is the answer. Okay. Now we'll see the another example. Okay. This is the second question from the set practice set. So here it is given that 3x minus 5y equal to 16 and x minus 3y equal to 8. So this is the first equation and this is the second equation. Now here in the last question we have make the coefficient of y similar, but in this question we will make the coefficient of x will be same. Why? Because if you will see the coefficient of y, here it is 5, here it is 3. So 5 will not make 3 and 3 will not make 5. 3 को 5 बना सकते नहीं, और 5 कैन नॉट मेक 3 कि 5 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 5 नहीं आता. So we cannot make these two coefficient will be same. Then in this case we will make the coefficient of x as same, similar. ठीक है. तो coefficient of x को सेम बनाने के लिए here it is 3x, इधर सिर्फ x है ये इक्वेशन नंबर 2 में, तो इसलिए पूरे इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, वी विल मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन विथ 3. अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? यू हैव टू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन विथ 3. व्हाई? बिकॉज हियर इट इज 3x एंड वी हैव टू मेक दिस एज 3. ठीक है. तो ये x दिया है, अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 3x बन जाएगा. अंडरस्टूड माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग यू? ओके. So what we will do here, we'll make multiply equation number 2 with 3. So we'll write here multiply equation number 2 by 3. We get, ठीक है. If we multiply equation 2 by 3 तो 3 bracket x minus 3y equal to 8. Then we'll multiply 3 into x is 3x minus 3 3s are 9y is equal to 3 8s are 24. Call this as equation number 3. अब तुम यहाँ देख सकते, if you will observe that you can see equation number 1 और equation number 3 में दोनों तरफ कोएफिशिएंट क्या आया, सेम आया है. कैसे सेम आया? इधर भी 3x है, इधर भी 3x है, और दोनों की साइन भी सेम है. ये 3x का साइन क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ भी 3x का साइन क्या है, पॉजिटिव. सो व्हाट वी विल डू, तो मैंने तुमको बताया था जब भी अगर ये इक्वेशन में यहाँ लिख लेता, कोएफिशिएंट भी सेम रहेगा और साइन भी सेम रहेगा, so what we will do, we will go for subtraction. Now you can see here, if you will see here it is 3x minus 9y equal to 24 and 3x minus 5y equal to 16. जब दोनों की कोएफिशिएंट सेम है और दोनों का साइन भी सेम है, then we will go for subtraction. और अगर दोनों की कोएफिशिएंट सेम और साइन अल्टरनेट है तो एडिशन करेंगे. ये कंसेप्ट याद रखो. Whenever two quantities, the coefficient of two variable is similar and their sign are same, then we'll go for subtraction. If the coefficient are same and the sign are alternate, then we'll go for addition. So we will write here subtracting equation 3 by equation 1. we get, तो क्या आएगा, 3x minus 9y equal to 24 and 3x minus 5y equal to 16. then minus, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते एक चीज याद रखो, सेकेंड साइन विल बी चेंज, अल्टरनेट साइन चेंज हो जाएंगी, न्यू हो जाएंगी.
Yes, I have here it is plus 5 plus 3x and will write minus. Here it is minus, will write plus. Then it is plus, will write minus. मतलब साइन को क्या करना है, हमें चेंज करना है. कौन से इक्वेशन की, सेकंड इक्वेशन की. तो हमेशा याद रखना एडिशन में साइन चेंज नहीं होता, बट इफ यू गो फॉर सब्ट्रैक्शन एंड इफ यू आर डूइंग सब्ट्रैक्शन फॉर दोज इक्वेशन, तो देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट बाय चेंजिंग देयर साइन. वी हैव टू चेंज देयर साइन. कैसा करें, प्लस 3x है तो विल राइट माइनस 3x, माइनस 5 आए तो प्लस 5 आए, प्लस 16 है तो विल राइट माइनस 16. ना विल माइनस 3x विल गेट कैंसल. अभी हाँ, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 9 में से 5 गया, माइनस 4y साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 24 में 16 निकालो, प्लस माइनस इज माइनस, 16 में से 24 निकालो तो कितना आता है 8 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस, बिकॉज 24 में से 16 गया तो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज पॉजिटिव, 24 का साइन प्लस है, विल राइट 8 एंड y इज इक्वल टू 8 अपॉन माइनस 4. तो माइनस 4 1 ज़ा माइनस 4, माइनस 4 2 ज़ा 8, तो y इक्वल टू कितना आ गया माइनस 2. ठीक है, देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 2. y इक्वल टू माइनस 2 आ गया. नाउ विल सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3. सो व्हाट विल डू हियर, विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y. What is the value of y here? We are getting y equal to minus 2. So we'll write y equal to minus 2 in equation number 1. We'll write here put y equal to minus 2 in equation number 1. So what is the equation number 1 here? That is 3x minus 5y equal to 16. This is the equation number 1. Now we will substitute. How will we substitute? 3x minus 5y equal to 16. What is the value of y? Is minus 2. So 3x minus 5 bracket minus 2 is equal to 16. So 3x minus of minus plus 5 to 10 is equal to 16. Then 10 will go there. So 3x equal to 16 minus 10. Then 3x equal to 16 minus 10, you will get 6. Yes or no? क्या किया हमने, देखो फिर से 3x minus 5y equal to 16 it is there. What we have done here? First of all we will write 3x minus 5. y का वैल्यू कितना है, minus 2. So we have put up while y equal to minus 2 equal to 16. After that, okay, 3x will be same. Okay, minus minus is plus, 5 to the 10 equal to 16. Then 10 will go there. 16 minus 10 is 6. Therefore x equal to 6 upon 3. 3 1 is 3, 3 2 is 6. Therefore x equal to 2. Therefore the value of x is 2 and y कितना आ गया, minus 2. Therefore we'll write x equal to 2 and y equal to minus 2. This is the answer. So we have completed this example. Okay, so today we have completed 2 examples for the same practice set. Okay, this chapter is very simple, only one exercise is there. We have to just simplify the equation. Okay, so there are 2-3 types of equations are there. In the first pattern we have seen, if the coefficients are same, directly we go for addition or subtraction. Okay, if the coefficients are same and their sign are also same, if both the coefficient have same sign, that is plus plus or minus minus, then we'll go for subtraction. And if both the coefficient have alternate sign, means one coefficient have plus sign, another coefficient has minus sign, then we'll go for addition. Okay, so this concept you have to be remember. Okay, if the coefficients are not same, just like this in this equation, here it is 3x minus 5y equal to 16 and x minus 3y equal to 8. But if you can see here it is 3x, but here it is x only. Here it is 5y, here it is only 3y. So these coefficients are not same. So here we have to make the coefficient as same. How will make? Here it is 3 and here it is x. So we'll multiply whole equation 2 with 3. If you'll multiply the equation number 2 by 3, then you will get 3x minus 9y equal to 25. Okay, then we have to make this coefficient as same. Okay, so either you can make the coefficient of x is same or either you can make the coefficient of y is same. But it depends how. If the coefficient of y is in multiple of 5 or it is in multiple of 3, then only we can multiply. 3 will not make 5, 5 will not make 3. Okay, so that's why we have taken x coefficient. Okay, so what we have written, multiply equation 2 by 3. Okay, we get, so we have multiplied this equation 3 into bracket x minus 3y equal to 8. After that 3 1s are 3x, 3 3s are 9y, 3 8s are 24. That what we have got. This is 3x minus 9y equal to 24. This is the new equation, call this as equation number 3.
And what is the equation number 1? 3x minus 5y equal to 16. Call this as equation number 1. You can see now here both the coefficient have same number 3x and the sign are also same. Sign दिख रहा है नहीं same, दोनों के पास कोई sign नहीं, means both have positive sign. So here it is 3x, here it is 3x, so plus 3x. So subtracting equation 3 by 1, ये दोनों को subtract करना है. So 3x minus 9 equal to 24 is up, 3x minus 5 equal to 16 is down. After that what we have done, we have go for subtraction. Okay, for doing subtraction what we done here, we have changed the sign. कैसे change करना है? Here it is plus 3x, so we have taken minus sign. Here it is minus, we have taken plus minus. 3x get cancelled, minus plus minus. 9 में से 5 गया 4, sign of greater number minus. So 24 minus 16 8, y equal to 8 minus 4 upon minus 4, y equal to minus 2. ठीक है? Then we put y equal to minus 2, same equation in this equation number 1, and after simplifying you will get x equal to 2. So likewise we will simplify this equation. So this example is very simple. You have to go for practice on this example. Thank you so much.